Good morning, all of you. Good morning. Shubham, Tushar. Yes, sir. Am I audible? क्या आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. Am I audible? Tushar. Sir. Yes, sir. आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी हमारी आवाज नहीं आ रही थी। Now continues the previous lecture. हम यहाँ थे 301 पे। The solar radiation of is mainly scratched or the transmitted but not absorbed by the atmosphere. Solar radiation. We know that the solar radiation by help of the solar system in the sun, no? But not absorbed by the atmosphere. This characteristics manifest because the क्यों होता है कि सोलर रेडिएशन से सन एनर्जी जो है, सन एनर्जी को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। हमें मालूम है कि सन की एनर्जी जो है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं और उसको स्टोर करके और फिर हम बैटरी हम चार्ज करते हैं, है ना, सोलर सिस्टम से। तो here the option is given, solar radiation is mainly in the visible spectrum for which atmosphere have a very low absorptivity। लो तो होता ही नहीं, है ना। जब सन रेज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा
कि दैट इज ग्रेप्स द पावर, ठीक है, अब्जॉर्ब जो है वो ज़्यादा करेंगे। सोलर रेडिएशन इज वेरी इंस्टेंट, यू नो, मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज scattered and the little remains the for the absorption. Atmospheric air has a very small density. No, there are small density नहीं है. The answer is C. The most of the solar radiation is scattered and little remains for the absorption. है ना, जब सोलर एनर्जी, ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी अगर हमने एक पैनल लगा दिया, आपने कहीं अगर आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी की बहुत सारे पैनल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ द पैनल्स होते हैं, और उस पैनल्स में जो यूज होती है, जो ग्राफ जो होती है वो थिन फिल्म लगी होती है, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू द थिन फिल्म वो सोलर एनर्जी उस पैनल में ऑब्जर्व करते हैं वो, और थ्रू द बैटरी जो है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दैट मीन्स द मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन is scattered and the little remains for the absorption. Next question is choose the false statement. Choose the false statement. Snow is nearly back to the thermal radiation. Snow is nearly back to the thermal radiation. Next option is absorption of the radiation occurs. Absorption of the radiation occurs in the very thin layer material near the surface. Transmissivity is varies with the wavelength of incident radiation. That is, a material may be non-transport for a certain wavelength band and the transparent for the other. It is the right. हमेशा जो है ट्रांसमिसिविटी जो होता है वो मटेरियल में भी द नॉन ट्रांसपोर्ट and certain wavelength band is the transparent for the other. Most of the engineering material have rough surface, and these rough surface give regular reflection. नहीं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल तो दोनों चीजें होता है, रफ भी होता है स्मूथ भी होता है ना, तो मे बी दिस स्टेटमेंट स्नो नियरली द थर्मल रेडिएशन, so that means the D option is the false statement. हमने मटेरियल साइंस में पढ़ा है कि वी नो दैट कि मटेरियल जो है वो रफ भी हो सकता है स्मूथ भी हो सकता है, राइट, तो डी ऑप्शन इज द फॉल्स स्टेटमेंट. इंजीनियरिंग मटेरियल इज द रफ surfaces and those rough surfaces give the regular specular reflection. Next question. The normal automobile radiator is a heat exchanger of the type. नॉर्मल ऑटोमोबाइल रेडिएटर आपने देखा होगा कि चाहे कार हो, इसमें बस हो, ट्रक हो, रेडिएटर लगा होता है जिसमें कि हम आगे पानी डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, और वो थ्रू द फैन जो क्या करता है, इंजन की हीट को वो कम करता है. रेडिएटर का काम फंक्शन क्या होगा, हीट को वो कम करेगा, राइट. तो जो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन है उसमें वायर सा बना होता है. आप बाहर से अगर आप देखोगे साइड से, जैसे आप इंजन की बोनट जब आप उठाओगे तो उसमें देखोगे आप कि उसमें वायर सा बना होता है, लगेगा कि आपको ट्यूब सा बना हुआ है. वो कैसा होता है, जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट वो नहीं हो सकता, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो.
वो हमेशा क्रॉस फ्लो में होता है। आप देखोगे उसको कभी, आप अगर आपको देखने का मौका मिला होगा, इन द ऑटोमोबाइल दैट फ्लो ऑफ द डायरेक्शन दैट इज इन द क्रॉस फ्लो होता है। नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल में जो रेडिएटर लगा होता है, आंसर इज क्रॉस फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैचुरेटेड स्टीम is allowed to condense over a vertical fault surface and the condensed film flows down the surface. The local coefficient of the heat transfer for condensation, local coefficient of heat transfer of condensation, local heat transfer of the condensation के लिए हमें क्या मिलेगा, राइट? कि हमें क्या कह सकते हैं इसे, remains constant at all height of the surfaces, decreases with the increases distance from the top of the surface, increases with the increasing thickness of the condensed film, increases with the increasing temperature difference between the surface of the vapor. So answer is B. The decreases with the increases of distance from the top of the surface, ना top of the surface. ओके हो गया भाई, ऑटोमेटिकली top of the surface, that is decreases with increases the distance from the top of the surface. Next question, which dimensionless number has a sufficient role of forced convection? मे बी कि इसका आंसर साहब बहुत आसानी तरीके से आपको मालूम होगा। इन द फोर्थ डायमेंशंस के लिए हमारा जो हम यूज करते हैं No. दैट इज द, उसी फोर्स डायमेंशन से मतलब हमें क्या होता है, जैसे हम फोर्स फोर्स मोटर हम अप्लाई करते हैं तो जो फ्लूइड की जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो से हमारा कहाँ पहुंच जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में, है ना? तो हम कब पता करते हैं कि लेमिनार से टर्बुलेंट में गया, जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो डायमेंशंस लेस नंबर तो रेनॉल्ड्स नंबर कोई डायमेंशन होता नहीं है, हैज ए सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ force convection. The answer is Reynolds number, right? Reynolds number, सबसे पहले हम Reynolds number ही निकालते हैं। Gas have a poor, gas है, gases have a poor reflectivity, गैस हमेशा रिफ्लेक्टिविटी होता है, राइट? तो gases have a poor reflectivity. Next question, identify a poor good insulator. Insulator, poor good insulator. तो पुअर गुड इंसुलेटर हमने पढ़ा है, द गुड इंसुलेटर इज दैट इज द गुड इंसुलेटर इज द ग्लास wool. Glass wool is the good insulator. Next question, question number 308. A fin produced from the surfaces which is held at a temperature higher than
the environment, the environment, the heat transfer, the heat transfer away from the fin is, हीट ट्रांसफर जो फिन से जो गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो फिन में जो लगा होता है, जो टेम्परेचर अगर वहां से गुजर रहा है तो उसको हीट ट्रांसफर क्या होता है? दैट मीन्स उसके सरफेस एरिया से, आउटर सरफेस एरिया से जो है वो हीट जो है एटमॉस्फेयर एयर होता है ना? तो फिन फिन प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेसेस which the held at a temperature higher than that of its environments. The heat transferred away from the fin is heat escaping from the tip of the fin, heat conducted along the fin length, convective heat transfer from the fin surface. Yes, C is the right answer, is convective heat transfer from the fin surfaces. Some of the heat conducted along the fin length and that convected from the surfaces. The answer is C. Convective heat transfer from the fin surfaces. ये डी ऑप्शन में सम ऑफ द हीट कंडक्टेड, नहीं, सम ऑफ द हीट कंडक्टेड नहीं होगा। जब फिन 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 होगा तो एट द एटमॉस्फेरिक एयर से उसकी जो सरफेसेस है, उस फिन फिन का वर्क क्या है? द कूल ऑफ द इंजन, है ना? हीट जो है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो हीट को एटमॉस्फेरिक एयर में वो कूल कर रहा है, राइट? दैट इज कॉल्ड द फिन फिन surfaces is that. For the absolutely white or specular body, फिर से आ गया ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी। एब्सोल्युटली व्हाइट और स्पेकुलर बॉडी, white or absolute body is that is reflected to the rho is equals to 1 and alpha equals to tau equals to 0. The B option is the right. ये हमें डायरेक्टली हमें पता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, cork is a good insulator. Cork is a good insulator because it flexible and can be the cast into the roll. It can be the powered. It is porous. That is the right answer. It is the porous. Good insulator है ना? Cork. It is density is the low. No, the C option is that, right? It is the porous. तो हमेशा जो कॉर्क है दैट इज द पोरस होता है। उसमें देखे होंगे आप, छोटे 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 दाने होते हैं जो हमें लगता है कि वो छोटे छोटे हल्के दाने हैं, है ना, बबल्स के जैसे होते हैं, बट इट इज द गुड इंसुलेटर इज दैट। वायर में भी आपने देखा होगा, राइट? द फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज sufficiently affected by the free convection heat transfer. फ्री कन्वेक्शन किस में होता है? दैट इज यूज द Rojob's number. Rojob's number is the free convection heat transfer is sufficiently affected by Rojob's number, है ना? तो B option is the right.
The material medium between the heat sources and receiver is not affected during the process of heat transfer by material medium between the heat sources. मटेरियल की मीडियम क्या है? हीट सोर्सेस की, हीट सोर्सेस and receiver is not affected during the process heat transmission by. The answer is, क्या आंसर होगा बताइए? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन? 100 बताइए। The heat material medium between the heat sources and the receiver is not affected during the process of heat transmission by the radiation. The answer is radiation. The C is the answer, right? क्योंकि रेडिएशन में ही जो है वो हमारा जो इफेक्टेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, milk spills over when the boiled in and the open vessel. The boiling of the milk at this instant is referred to as interface evaporation, subcooled boiling, no, film boiling. That is called in the film boiling. The C is the answer. Saturated, neglected boiling. The answer is C. The film boiling is, that is the right answer. Next question. Mark the system where in heat transfer, mark the system where the heat transfer by the forced convection. By the forced convection. Forced convection में क्या होता है ना? सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो chilling affected the cold wind on the warm body, fluid passing through the tube of a condenser and other heat exchanger equipment, heat flow from a hot prevalent of the surrounding of the atmosphere. That C is the right answer. जो फोर्स कन्वेक्शन होता है तो दैट इज द हॉट प्रिवेंटेंट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो सी इज द राइट आंसर. It is heat exchanger on the outside of the cool and the warm pipe. The answer is the C. Heat flow from the hot prevalent and surrounding the atmosphere. The C is the answer. Next question. Not able to examples of uniform generation of the heat within the conducting of the medium. Within the conducting of the medium. इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? Energy generated in the fuel elements of a nuclear reactor. Yes, this is the right. Energy generated in the fuel elements of a nuclear reactor. Lubrication of the energy due to the some extrameric chemical reaction. Chemical reaction. Resistance heating. Resistance heating is electrical application. So option is, that is the D, all of the above. All of the above.
क्योंकि हीट जो जनरेशन होता है हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में भी होता है ना। जैसे हम प्रेस करते हैं, राइट, रॉड है, इलेक्ट्रिकल रॉड है जो वाटर हीटर है ना। So electrical heating is appliance is that. Next question, question number 16. The thermal conductivity K and electrical conductivity of the metals at absolute temperature T. Thermal conductivity K, we know that electrical conductivity of the metal absolute temperature is the T. T is that the temperature है, related as a, किससे related है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, चला के दोस्त। Direct formula is that is the K upon sigma T is a constant, right? So B option is the right. This is the B option. Okay. Okay, sir. तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। यहाँ मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या बताया था? 312। आप लोगों ने आवाज नहीं आई थी अब। रेडिएशन होगा सर इसका। यस, गुड, रेडिएशन। 317 is that the heat transmission is directly linked with the transport of the medium itself. Heat transmission of directly linked with the transport of the medium. There is the actual motion of heated. There is the actual motion of the heated particle during the conduction only, convection only, radiation only. The answer is convection. Only for the heated particles during the convection. तीन चीजें होती है ना, जब हम अगर मान लिया किसी गैस पे अगर आप पॉट में आप हीट दे रहे हो, तो तीन चीजें कर रहे हैं। वहां पे रेडिएशन भी हो रहा है, वहां पे हमारा कंडक्शन भी हो रहा है, और वहां पे हमारा कन्वेक्शन भी हो रहा है। तो कन्वेक्शन इज दैट, है ना। अगर मान लिया एक किसी रॉड को अगर एक सिरे पे अगर आप गर्म करो तो दूसरे सिरे भी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा ड्यू टू द कन्वेक्शन। There is the actual motion of the heated of the particle during the convection. Next question is Lampt parameter analysis of the transient heat conduction in the solid stipulates the heat conduction, that is the infinite thermal conductivity is the right. Infinite thermal conductivity. Negligible temperature gradient, that is the particle, that is the particularly uniform temperature within the solid. Small conduction resistance, maintenance of the convective resistance, all of the above. The answer is the E. ये सारी चीजें होती हैं। Next question. For steady state, the constant value of the thermal conductivity, the temperature distribution associated with
radial conduction through a cylinders through the cylinders, that is the answer is logarithmic is the answer. Linear नहीं होगा, parabolic नहीं होगा, exponential vibration, no. The answer is B, logarithmic. The essential condition for the transfer of the heat from one body to another, one body to another, एक से दूसरे, one body to another body, that is the both of the bodies must be the physical conduct. Heat constant on the body must be more than that of the other. One of the bodies have must have the having the value of the thermal conductivity. There is the must exist of the temperature difference in between the body. The option is option होगा इसका D. There the must exist a temperature difference between the body. For a perfectly black body, फिर से वही आ गए, इसके क्वेश्चन जरूर आना ही आना है ना. व्हाइट बॉडी ब्लैक बॉडी की जो क्वेश्चंस होगी ये जरूर आना ही आना है. परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अल्फा इक्वल्स टू 1, रो इक्वल्स टू 0 एंड टाउ इक्वल्स टू 0. दैट इज द आंसर इज द ए. ठीक है. ऑब्जर्विटी अल्फा इक्वल्स टू 1, रिफ्लेक्टिविटी रो इक्वल्स टू 0 एंड ट्रांसमिटिविटी इज द 0. इसी को हम लिख देते हैं अल्फा रो इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू 0. The A is the answer. Identify the wrong statement. Identify the wrong statement. The process of the heat transfer is the thermodynamically and the irreversible process. A material medium is always necessary for the heat transmission. For heat exchanger, a heat exchanger for temperature gradient must be the exist. Heat flow is always from the higher temperature to a lower temperature in accordance of the second law of thermodynamics. This is the right. The answer is here. The wrong statement is B. A material medium is always necessary for the heat transmission. The B is the answer. Wrong statement. ये जितने भी रॉन्ग स्टेटमेंट वाले आते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट या राइट स्टेटमेंट, आप उसको ध्यान से आप पढ़िएगा. क्वेश्चंस को एक बार 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट इज द राइट है या रॉन्ग है ना. थोड़े थोड़े से उसमें आपको चेंजिंग आपको दिख रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपको ये चीजें समझना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of the embodied power of the body to that the black body at a same temperature that is the emissivity is constant for all wavelength such as the white, transparent,
gray, or the answer is gray. The C is the answer. The gray body is the emissivity power of the body that the black body of the same temperature, right? That is the same temperature either. Next question. The roof of the house have been given the coating of the seeing of the metallic paint. Metallic paint. The constantly the temperature inside of the room will be कम होगा, ज्यादा होगा, सेम होगा, रिमेन अनफेड। ये चीजें हम घर में भी यूज करते हैं। द रूफ हाउस हैज बीन द आंसर इज फॉल, कम होगा, है ना? उसी के लिए हम करते हैं ना कोटिंग, शाइनिंग ऑफ द मेटेलिक पेंट, Yes. राइट? दैट फॉल्स होगा। द मेटेलिक पेंट अगर हम फॉल्स हम अगर ये रूफ में अगर हम लगाते हैं तो दैट इज द कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the emissivity is likely to the higher in case of rubber, paper, carbon, iron dioxide. The answer is Paper. paper. ये तो पहले भी आया है, पहले भी बताया, ये क्वेश्चन सेम ही था शायद। A radiation shielded sound, radiation shielded sound, a high transmissivity absorb all the radiation, have a high reflectivity power, partially absorbed. The answer is the A. High have a high transmissivity. रेडिएशन में हमेशा हमेरा हाई ट्रांसमिसिविटी होती है, इस चीज को याद रखिएगा। द रेडिएशन शील्डेड शुड that is the high have a high transmissivity. Next question. The thermal conductivity is defined as a heat flow per unit time. Thermal conductivity is defined as the per unit time when the temperature gradient is unity, when the unit of the temperature in difference uh, may maintain the across the opposite face of a wall through a unit thickness of the wall across the unit area when the temperature gradient of the unity. The option is the D. Across unit area is temperature gradient is unity. The D option is the right. In the thermal conductivity, K होता है defined as the heat flow per unit time. Per unit time के according एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग ही वो हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो के क्या हो जाएगा? तो अक्रॉस द के इज द एरिया व्हेन द टेम्परेचर ग्रेडियंट बाय द, तो धीरे धीरे जो क्या होता है वो हीट जो है वो एक्सप्रेट करता है।